हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग बहुत ज़ोरों शोरों के साथ तैयारी में लगे हुए होंगे और अब आपका एग्ज़ाम आइडिया क्लासेस में स्वागत है। आज मैं फिजिक्स में लास्ट टॉपिक पर जो आपको कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, आज मैं कराने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप ये याद रखिएगा, डाइपोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डाइपोल से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर आएगा, या तो व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन और द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अलावा पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड द potential energy of an electric dipole plays inside electric field। तो टर्न बाई टर्न हम करते रहेंगे। आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप देख सकते हैं जैसे कि ये डाइपोल है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज इज प्लेस एट पॉइंट ए प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस एट पॉइंट बी and we have to find the electric field on its equatorial line। equatorial line means the perpendicular bisector। इसको हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। ब्रॉड साइड ऑन किस लिए? क्योंकि इसके चौड़ी वाली साइड में एंड ऑन पोजीशन थी एक्सियल लाइन जिसमें एक एंड पे थे। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो आप वहाँ पर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो कि भाई हम क्या करेंगे, निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पहले यहाँ फाइंड आउट करेंगे, देन वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज एंड आफ्टर दैट वी विल find the resultant of all these two electric fields। So suppose now I am going to find the electric field at this point P। This is the point P, point of observation। So electric field at point P due to this negative charge will be E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon the distance is AP square and in this diagram we have considered this AP। आप देख सकते हो by Pythagoras theorem R square is equal to A square plus R square। So if we place the value of AP square means R square, AP is equal to R square plus A square। So E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 AP square is equal to AO square plus OP square means Q upon R square plus A square। And the direction of this electric field is directed from P towards A। यहाँ लिख देंगे हम along PA। Next, this is the electric field EA। Now electric field at point P due to the charge plus Q placed at point B, this is EB। EB is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon BP square, Q upon BP square, and the BP and AP both are equal। You can see by the symmetry of this geometry, AP is equal to BP, BP square is equal to BO square plus OP square means same, we can say it is equal to A square plus R square। So EB is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R square plus A square, and this electric field is directed away from the positive charge, you can say from towards PK, along PK। अब as electric field is a vector quantity, we will find the resultant of these electric field vectorially। Vector E is equal to EA plus EB। अब यहाँ हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्टेंट को दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ और अदरवाइज we can resolve the components। As you can see the symmetry, the distance AP is equal to distance EB and both the charges are equal, hence the magnitude of electric field EA is equal to magnitude of electric field EB। As their magnitudes are equal, if we resolve the components you will find that the component of EB, it is EB sin theta, and the component of
EA, that is EA sin theta. Both these components are equal and opposite. I can show you here. देखिए EB sin theta and EA sin theta both are in opposite direction. अब आप देख सकते हो EB cos theta and EA cos theta both are directed along PX dash. So the resultant electric field at this point is E is equal to EA cos theta plus EB cos theta. EA cos theta plus EB cos theta. So we can place the value of EA and EB both here. EA is 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square plus A square. R square plus A square cos theta. And you can see EB is also the same, 1 upon 4 pi epsilon naught 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square plus A square cos theta. So both the terms are similar. We can write 1 upon 4 pi epsilon 0 2Q cos theta upon R square plus A square. Now what is the value of cos theta? So from this is the angle theta, this is angle theta, corresponding angle, this angle is theta, and this is the alternate angle theta. In this right angle triangle, cos theta is equal to base upon hypotenuse, that is A upon R, and R is under root R square plus A square. So we can place the value of cos theta here. E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2Q upon R square plus A square, and the value of cos theta is A upon under root R square plus A square. R square plus A square into under root R square plus A square, this become R square plus A square to the power 3 by 2. So E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q into 2A upon R square plus A square to the power 3 by 2. And we know the dipole moment is a quantity which is P is equal to Q into 2A. So here I substitute the value of Q into 2A. The resultant electric field will become 1 upon 4 pi epsilon 0 P upon R square plus A square to the power 3 by 2. And the resultant direction, you can see it is in the opposite direction of electric dipole, as electric dipole vector P is directed from minus charge towards the positive charge, but the resultant electric field is along Px dash. So if we write this equation vectorially, so it will become vector E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 minus P. Why minus? Because vector P and resultant electric field both are in opposite direction, upon R square plus A square to the power 3 by 2. We can take an approximation. What is that? If our dipole is very small, usually they are very small, and the point of observation is far away from this, means R is much greater than A. In that case, we can ignore this A square, because A itself is small, so A square will be even smaller. We can ignore the R square, then R square to the power 3 by 2 become R cube. Hence, E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 P upon R cube. तो अगर आप याद करें, एक्सियल लाइन पर क्या फार्मूला आया था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन आर क्यूब, और इक्वेटोरियल लाइन पर क्या आया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन आर क्यूब. विद दिस आई कंक्लूड दिस क्लास. नेक्स्ट हम आर्टिकल आएंगे, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. थैंक यू.